Hello students, here I am Gargi Pamar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management Program. So here I am back with an online lecture series on company account subject. So let's start with the lecture. In today's lecture, we are going to start 4th unit of your syllabus and we are going to cover first topic of your 4th unit, that is valuation of goodwill. So first of all, question arises: what does mean by goodwill? Okay. So first we will see the meaning of goodwill. Then we will start valuation of goodwill. Yes. So let me show you the slide. Yes. See. So in simple words, if we say what is the goodwill, then goodwill basically is the reputation of a brand or reputation of a company. So basically, goodwill is the value of the reputation of firm built over time with respect to the expected future profit over and above the normal profit. So basically, goodwill is a reputation that is you build or your company or your brand build in market. Okay, so value of that reputation will be known as goodwill. Now, so see, how will we calculate the value of goodwill? Which will be the what will be the value of goodwill? So see, the difference between normal profit and expected future profit will be known as goodwill. So normal profit means जो आपके सेम बिजनेस करने वाला जो एक कंपनी है जो बिल्कुल आपकी जैसे सेम बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस सेम है किसी दो कंपनी का, तो उस कंपनी का या ओवरऑल जो नॉर्मल प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट करते हो, नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो सकता है पास रिपोर्ट्स के बेसिस पे या जो भी आपने कैलकुलेशन करी है उसके हिसाब से आपको लगता है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है किसी बिजनेस का, और आपको लगता है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे आपका एक्सपेक्टेड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में जो आपका प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा जो आपका प्रॉफिट हुआ वो हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, आपकी गुडविल है मार्केट में। तो इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, दैट एक्सेस प्रॉफिट विल बी नोन एज वैल्यू ऑफ। ओके, then goodwill is an intangible real asset which cannot be seen or feel but exists in reality and can be bought and sold. So goodwill is an intangible asset. Then what do you understand by intangible assets? Intangible assets are those assets which you cannot feel or which you cannot see. Okay, which you cannot see or you cannot feel. That asset, but that asset exists in reality, and you can vote and sold that asset. So that asset will be known as intangible asset. So at the same time, goodwill, we cannot see the goodwill and we cannot feel the goodwill. But in actual situation, in practical life, it exists. Goodwill is always exists, and goodwill can be bought and sold. Okay, so basically, goodwill is an intangible asset. Okay, now see methods of valuation of goodwill. Then how will we value the goodwill? Goodwill is an intangible asset. Then how will we calculate that amount of goodwill or the value of goodwill? So to calculate the value of goodwill, there is three specific methods. First is average profit method. Second is super profit method. Third is capitalization method. In average profit method, there are two types of methods. First is simple average method. Second is weighted average method. At the same time, in super profit method, there is also two methods: the number of years purchase method and annuity method. And third is capitalization method. In this also, there is two type of method: capitalization of average profit, capitalization of super profit. Okay, so these are the three methods of valuation of goodwill. Okay. So first, we will start average profit method. So in average profit method, see, first method is simple average method. So see, under this method, the goodwill is valued as agreed number of years of purchase of average profit of the past year. So first we will calculate the average profit of past year, then we will multiply that average profit to number of years of purchase. Now, number of years of purchase is given to you in question. It always will be given to you in question. Okay, but average profit we have to calculate. Then how will we calculate average profit? So see, आज तक जब भी हम average किसी भी figure का, किसी भी amount का अगर हम average calculate करते हैं तो हम कैसे करते हैं? अगर हमारे पास दो terms है या दो figures given है आपको, तो हम दो figures को क्या करेंगे? First figure plus second figure divide by 2 अगर average करना हो। अगर थ्री
figures का average करना तो first figure plus second figure plus third figure divided by 3. If you want to average for 4 figures, then first figure plus second figure, then third figure plus fourth figure divided by 4. ऐसे ही करता है ऐसे. तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज हमको 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट प्लस सेकंड ईयर प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3. सपोज you have 4 years profit, then what how will you calculate average profit? First year's profit plus second year's profit plus third year's profit plus fourth year's profit divided by 4. Like this you will calculate the average profit. Okay, then first you will calculate the average profit, then you will multiply that average profit to number of years of purchase. So resultant amount will be goodwill, value of goodwill. Okay, so let's have an example for average profit. Yes, there is an example. X Limited agreed to purchase business of a sole trader. For that purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. Okay, so you have given 5 years profit. Okay, and you the years of purchase is also given in question, that is 3 years. Okay, now what is the formula of valuation of goodwill? See, average profit multiplied the number of years of purchase. Okay, so first you have to calculate average profit. So let's see. First calculate average profit. So for average profit, there is 5 years profit, that is 24,000, 20,000, 22,000, 26,000, 24,000. You will add all these 5 years profit, and the number of years is 5, then you will divide the profit by 5. So average profit will be 23,200. Now you have calculated average profit, now you have to calculate goodwill. So for calculation of goodwill, see, goodwill multiplied by years of purchase. So goodwill is 23,200 and years of purchase is 3 years, that is given in question here. 3 years purchase. So purchase of years of purchase is 3. So 23,200 multiplied by 3, that is 69,600. This is the value of goodwill. Okay. So like this you will calculate the value of goodwill by average profit method. Okay. Now let's move on next method, that is weighted average method. See, under this method the goodwill is valued at an agreed number of years of purchase of weighted average profit of the past year. So in this method you will calculate the value of goodwill on the basis of numbers of years of purchase of weighted average profit. So in last method we calculate average profit and multiply that average profit by number of years of purchase. In this method we have to calculate weighted average method, then we have to multiply that weighted average to numbers of years of purchase. Okay. Now the question arises, how will you calculate the weighted average profit? So for this, let's see. First read this. We use the weighted average when there exists an increasing or decreasing trend in the profits given. So see, when you will prefer this method, when will you prefer this weighted average profit method? When the trend of profit that is given in question, the profit that is given in question, the trend of that profit is in increasing nature or in decreasing nature continuously. अगर आपको 5 years का प्रॉफिट गिवन है, तो अगर वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग नेचर पे है, देन दिस इज प्रेफरेबल टू अप्लाई द वेटेड एवरेज मेथड. ओके, तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि हम वेटेड एवरेज मेथड. इफ द ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग नेचर, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग नेचर, देन वी विल आल्सो अप्लाई द वेटेड एवरेज. तो अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, देन यू कैन अप्लाई weighted average method. This is easy method to apply if you are continuously decreasing in your profit. Okay, and if you are increasing in your profit, there is any increasing nature in your profit continuously, your profit is continuously increasing, then in that case also this is preferable to apply weighted average method. Okay, now how will we calculate the goodwill? So first we have to multiply weighted average profit to numbers of years of purchase. Okay, weighted average profit multiplied by number of years of purchase. Now how will we calculate weighted average profit? So for weighted average profit you will sum all the profits, you will add all the profits, multiply by base divided by sum of base. Okay, so let's have an example.
There is an example. Y Limited proposed to purchase business carried on by Mr. A. Goodwill of this purpose is agreed to be valued at 3 years purchase of weighted average profit for past 4 years. So, in question, in first line, you have question have clearly mentioned that the years of purchase is 3, and you are given 4 years profit. Okay, so see what is the 4 years profit in 2010, 20,200 profit. In 2011, 24,800 profit. In 2012, 20,000 profit. And 2013, 30,000 profit is there. Now weights is given to you 1, 2, 3, and 4. On a scrutiny of accounts, the following matters are reviewed. So when you scrutinize your account, these matters are revealed. That is not included in that. So आपके ये secrets या ये matters आपके revealed हुए. That means ये अब रिवील हुए. ये आपको जब आपने कैलकुलेशन करी, जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी, जब तक आपके ये फैक्टर्स आपके रिवील नहीं हुए थे, इसका मतलब ये इनको आपने कंसिडरेशन में नहीं लिया, इनको कंसिडर नहीं किया व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ दीज ईयर्स. जब आप इन ईयर्स में प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने इन फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया. सो देयर इज नथिंग टू वरी. उस वक्त नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कैलकुलेट कर देंगे और हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे. ओके. On 4 September 2012, a major repair was made in respect to the plant, incurring ₹6,000, which was charged to revenue. The said sum is agreed to capitalize for goodwill. Calculation subject to adjustment of depreciation. Depreciation of 10% per annum on reducing balancing method. So, on 1 September 2012 को आपका क्या मैटर रिवील हुआ कि एक प्लांट है सॉरी एक आपने रिपेयर एक्सपेंस किया, एक प्लांट है जिसके ऊपर आपने रिपेयर एक्सपेंस किया और उस रिपेयर के एक्सपेंस करने की वजह से आपके प्लांट का कितना वैल्यू इनकर हुई, आपके प्लांट से की 6,000 रुपीज का आपको रेवेन्यू इनकर हुआ. आपके प्लांट से आपको 6,000 का रेवेन्यू इनकर हुआ या आपके प्लांट पे 6,000 की वैल्यू और इंक्रीज हुई. ओके. नाउ the said sum is agreed to capitalize for goodwill. तो आपको ये goodwill में capitalize करना था. ये 6,000 की आपको इनकम हुई, आपने रिपेयर करवाया अपने प्लांट को, उस प्लांट से फिर 6,000 की इनकम और आने लग गई इन 2012. ओके. नाउ इसको goodwill में capitalize करना चाहिए था. इसको ये एग्री हुए कि इसको capitalize करना चाहिए goodwill में. तो कौन से goodwill में आप capitalize करोगे, कौन से प्रॉफिट में इसको capitalize करोगे? सिर्फ 2012, क्योंकि ये मैटर किससे रिलेटेड है? सिर्फ 2012 से रिलेटेड. ओके. 2012 में आपने रिपेयर करवाया, उसकी वजह से 6,000 का आपको प्रॉफिट हुआ. ओके. तो 6,000 का रेवेन्यू और आने लगा. तो आपको ये रेवेन्यू किसमें इंक्लूड करना है? सिर्फ 2012 वाले में एडजस्ट करना है. which was charged to revenue said subject to calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balancing method. तो ये 6,000 का जो आपके प्लांट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ ड्यू टू रिपेयर, उसके ऊपर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस. तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलिए, डब्ल्यूडीबी मेथड बोलिए, एक ही बात है. तो सी इस 6,000 पे आपको 10% जो डेप्रिसिएशन लगा रहा है उसका एडजस्टमेंट क्या आपको 2010 वाले प्रॉफिट में करना है? नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये 6,000 का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2012 से स्टार्ट हो रहा है. दैट मींस 2010 और 11 में तो था ही नहीं. 2012 में आपने एक्सपेंस लगाया रिपेयर का, उसकी वजह से 6,000 की वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ. ओके. तो 10-11 में तो ये था ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, ना 6,000 का ना 10% डेप्रिसिएशन का. नाउ इस 10% डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किसमें करना है? 2012 में करना है. और 10% डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस आपको करना है वो 2013 में भी करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो जब तक ही 6,000 की वैल्यू रहेगी तब तक चलेगा. ओके. प्लांट आपका जब तक रहेगा डेप्रिसिएशन तो हर साल लगता रहेगा. वो 2012 में अगर 6,000 का इंक्रीमेंट हुआ आपके प्लांट में, प्लांट की वैल्यू 6,000 से इंक्रीज हुई, तो 2012 में लगेगा डेप्रिसिएशन, 13 में लगेगा, 14 में लगेगा, 15 में लगेगा, 2016 में लगेगा, आगे लगता जाएगा जब तक इस प्लांट की लाइफ है. ओके. देन द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2011 वाज ओवरवैल्यूड बाय 2,400. ओके. Then to cover the management costs and annual charges of 4,800 should be made for the purpose of goodwill valuation. Okay. Now there is solution. So गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमको इन सब का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो होना चाहिए था, जो इनका एडजस्टमेंट आपके प्रॉफिट में होना चाहिए था, लेकिन आपके प्रॉफिट में हो नहीं पाया. ये फैक्टर्स आपके बाद में रिवील हुए जब आपने अपने अकाउंट्स को
स्क्रूटनाइज किया। ओके, तो अब एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। So 2012 में you have profit 20,200, 24,800, 20,000, 30,000. These are the 4 years: 2010, 11, 12, and 13. Okay, profit is given to you, that is 20,000, 24,800, 20,000, 30,000. This is given to you. Now, first of all, that less the management cost. आपका कुछ cost incur हुआ, 4,800 का cost आपका आया, जिसका मैनेजमेंट कॉस्ट का 4,800 रुपीज आपने दिया, जो आप चार्ज करना भूल गए हो, चार्ज नहीं करा आपने, तो कोई बात नहीं, अब चार्ज कर लो प्रॉफिट में से, ये लेस कर दो क्योंकि ये एक्सपेंस है। ओके, ये एक्सपेंस है तो इसको लेस कर दो, 4,800 48, और सी ये 4,800 किसी स्पेसिफिक ईयर से रिलेटेड नहीं है। इन दोनों में देखो, आपको इन दोनों सिचुएशन में क्या बोला गया है, 2012 से स्पेसिफिकली रिलेटेड है, ये 2011 से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। यहाँ पे आपको क्या बोल दिया गया है, ये एनुअल चार्जेस मतलब हर ईयर में लगा होगा, तो आप 4,800 का एक्सपेंस सारी ईयर्स में लेस कर देंगे। ओके, रिजल्टेंट अमाउंट विल बी 15,400, 20,000, 15,200, 25,200. Okay, now let's discuss second B situation. The closing stock for the year 2012 was overvalued at ₹2400. 2011 में क्या हुआ आपका, आपने क्लोजिंग स्टॉक जो था 11 में क्लोजिंग स्टॉक था जो 2,400 से आपने ओवर वैल्यू कर दिया। जब अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दोगे तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा शो करेगा, जो कि करना नहीं चाहिए था। आपका एक्चुअल में जो स्टॉक था उससे ज्यादा आपने स्टॉक को वैल्यू कर लिया। अब उससे ज्यादा कर लिया तो दैट मींस आपका प्रॉफिट एग्जैक्टली सही शो नहीं हो रहा होगा, राइट शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि 2,400 का आपने पहले से ही एक्स्ट्रा कर रखा है, ओवर वैल्यू कर रखा है, ज्यादा कर रखा है। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कर रखा है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा आपका शो कर रहा होगा। तो कोई बात नहीं, इसको अब रेक्टिफाई कर दो। तो अगर आपने ज्यादा दिखा दिया है तो इस टाइम आप क्या कर दो, इसको अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस कर दो। कौन सी ईयर में से, 2011 में से लेस कर दो। नाउ सी, जो 2011 में जो ओवर वैल्यूएशन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके आपका ओपनिंग स्टॉक बना होगा। 2012 में वो जाके आपका ओपनिंग स्टॉक बना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2011 का अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने 2,400 से ओवर वैल्यू कर रखा है, दैट मींस आपने 2012 का ओपनिंग स्टॉक भी 2,400 से ओवर वैल्यू कर रखा है। ओके, नाउ अगर आप ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम शो होगा। ओके, अगर आपने ओवर वैल्यू कर दिया है, ज्यादा वैल्यू कर दिया, इसका मतलब आपको प्रॉफिट कम शो हो रहा होगा। तो इसलिए अगर कम शो हो रहा है तो आप इसको रेक्टिफाई करने के लिए वापस ऐड कर दीजिए। तो आपने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया, दैट इज 2,400। ओके, तो रिजल्टेंट अमाउंट विल बी 15,400, 17,600, 70,600, 25,200। नाउ हमारे पास सिर्फ एक ये वाला एडजस्टमेंट रहा है जो हमको करना बाकी है। तो ये एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, 6,000 का हमको प्रॉफिट हुआ है, हमको प्लांट में रेवेन्यू हो रहा है, रिपेयर का एक्सपेंस करने से 6,000 का रेवेन्यू एक्स्ट्रा हो रहा है हमको प्लांट में। ओके, कौन सी ईयर में, 2012 में। तो 2012 में हमको क्या हुआ है, 6,000 की वैल्यू इंक्रीज हुई है, कैपिटलाइजेशन हुआ है रिपेयर एक्सपेंस का, कुछ रेवेन्यू आया हमारे पास 6,000 का, इसलिए 2012 में हमने ये ऐड कर दिया, ऐड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिपेयर 6,000 ऐड कर दिया। 17,600 में 6,000 आप ऐड कर दीजिए, then 15,400, 17,600, 23,600, 25,200. Okay, now less depreciation. अब आपको depreciation लेस करना है, तो कैलकुलेशन करें depreciation की। सी, ये 6,000 का रिपेयर एक्सपेंस आपने जो किया वो कब किया, 1 सितंबर 2012, जिसकी वजह से आपकी प्लांट की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 6 लाख रुपीज, और इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये कब इंक्रीज हुई, 1 सितंबर से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, 4 इयर्स का आपको क्या लगाना है, 4 इयर्स का आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, दिसंबर तक का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। So see, depreciation is depreciation. Yes, see, on 6,000 depreciation 10%, that is 600, और 4 months के लिए multiply by 4 divided by 12, that is 200. See, इसके लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हुआ। हम फाइनेंशियल ईयर नहीं लेके चल रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ये क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिसंबर मान के किया हुआ है, तो आप चाहो तो स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, तो अगर आप चाहो
तो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 सितंबर टू 31 मार्च भी मान सकते हो या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी अपना ईयर मान सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि सोल्यूशन दिसंबर मान के किया हुआ तो हम एक बार इसको दिसंबर मान के ही करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो अगर हम मानते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हमारा ईयर खत्म होता है, आपने कब परचेज कब रिपेयर एक्सपेंस किया है 1 सितंबर को, तो कितने मंथ का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 मंथ्स का। तो 6000 पे 4 मंथ्स का आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, दैट इज 200। तो आपने 200 लेस कर दिया डेप्रिसिएशन का। नाउ 2012 में डेप्रिसिएशन लगाया तो 2013 में भी लगेगा। नाउ डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे लगाना है आपको, डब्ल्यूडीबी मेथड पे। तो 6000 कॉस्ट का जिसमें से 2000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो रिमेनिंग इज 5800 का आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, दैट इज 580। डेप्रिसिएशन इज 580। तो adjusted profit is 15,400, 17,600, 23,400 and 24,620. Okay. So these are the 4 years profit of these are as follows. And the weightage in given in question, weights are given in question 1, 2, 3 and 4. So these are the profit, these are the weights. Then profit multiplied by weights, we will multiply the profit weights to calculate the weighted profit. Okay, we need weighted profit. Okay, so that's why we will multiply profit to weights. So this is the profit multiplied by weights, this is the profit. Now this is the profit, weighted profit. This is only the weighted profit. We multiply profit to weights. That's why this is the weighted profit. But we have to calculate what? We need weighted average profit. Okay, so weighted profit is that, and the weights are 10. So we will divide this amount by 10. So resultant amount will be weighted average profit. That is 21,928. Okay. Now let's calculate the goodwill. How will we calculate the goodwill? So for calculation of goodwill, the formula is weighted average profit, that is 21,928 multiplied by years of purchase. So years of purchase is given to you in question. In first line, that is 3 years. So we will multiply weighted average profit to 3. The resultant amount will be value of goodwill, that is 65,780. Okay. So this is all about your two methods. In next lecture, we will